Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor and we are going to start off our discussion with the nucleic acids. First of all, I would like to give you the big picture of our discussion. In this particular subsection, we will talk about the introduction to lipids. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू लिपिड्स पे बात करेंगे एंड सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज़ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हम न्यूक्लियोटाइड्स के जो हाई यील्ड फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. एंड थर्डली वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर पे बात करने के बाद फिर लास्ट पे हम डीएनए और आरएनए को आपस में कंपेयर भी करेंगे. So let's start off our discussion with introduction to the nucleic acids. So first of all, the definition. You can see in here they are polymers of nucleotides by definition. Simply nucleotides के ये polymers हैं and if you talk about their chemical nature, actually इनके नाम से ही इनकी chemical nature भी वाज़ेह हो रही है. You can see in here they are acids. So chemically ये acidic हैं, so named as nucleic acids because actually they are found in nucleus. So that's why we say they are nucleic, means pertaining to nucleus, and as they have got the acidic nature, that's why we call them as the acids. So nucleic acids are related to nucleus and acidic in nature, so that's why they're named so. And now let's talk about the building blocks of the nucleic acids. First,